Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter number 3, Indefinite Integration, Exercise 3.2a. Question number first, integrate the following with respect to x. So dear students, you have completed till question number 20 in question number first. So now today we should start from question number 21. Let I equal to integral of 5 minus 3x into 2 minus 3x whole raised to minus 1 by 2 into dx. So 5 minus 3x is first part and 2 minus 3x raised to minus 1 by 2 is the second part of integration. According to the rule of integration, or you can say according to the rule of substitution, we should substitute rational part as t, only rational part, not its index, not its power. So according to the rule, put 2 minus 3x equal to t. 2 minus 3x equal to t. Therefore, 2 minus t equal to 3x. Therefore, 2 minus t upon 3 equal to x. So this is the value of x in terms of t, and this is the value of t in terms of x. So we put 2 minus 3x as t. Now differentiating with respect to x on both sides. As you know, derivative of a constant term is 0. Therefore, derivative of 2 is 0. And derivative of minus 3x is minus 3 into 1 equals dt upon dx. Therefore, dx equal to minus dt upon 3, because minus sign comes this side and divide it by 3 and taking dx on that side. So dx equals minus dt upon 3. Now, integral I can be written as a rectangular bracket here. First, 5 minus, it was 5 minus 3x. First bracket was 5 minus 3x. So it can be written as 5 as it is, minus 3. Value of x in terms of t. You can see here, this is the value of x. X equals 2 minus t upon 3. So 5 minus 3 multiplied by 2 minus t upon 3 into t raised to minus half. This is the second part of integral and we have considered it is t. So this will be t raised to minus 1 upon 2. So this is t raised to minus 1 upon 2 and value of dx you know very well from this step it is minus dt by 3 as it is here minus dt upon 3. Now minus dt by 3 means here minus 1 upon 3 into dt. So it is equal to minus 1 upon 3 taking out of integral because it is constant term. So minus 1 by 3 into integral of here 5 minus, if you multiply by 3 in this bracket, so 3 will be cancelled. Okay, so 3 going by 3. So we get here 5 minus 2 and here minus into minus becomes plus, that is 5 minus 2 plus 3 into t raised to minus half as it is into dt, because minus 1 upon 3 is taken out. After that, this is equal to minus 1 by 3. Here 5 minus 2 becomes 3. So 5 minus 2 is 3 into t raised to minus half. That is 3 into t raised to minus half. Because 5 minus 2 is 3. So 3 into t raised to minus half is 3 into t raised to minus half. Plus t into t raised to minus half. Here its power is 1. Its power is minus half. So 1 minus half equal to half. So plus t raised to half into dt. Now in the next step, you have to integrate each term separately by using their formulae. So this is equal to minus 1 by 3
This 3 is constant as it is. Integral of t raised to minus half into dt is 2 root t plus t raised to half is 2 by 3 into t raised to 3 by 2 closed plus c. See once again. So therefore I equal to minus 1 by 3 in the rectangular bracket 3 into 2 root t plus 2 upon 3 into t raised to 3 by 2 bracket closed plus c. Clear? So this is 2 root t is the integral of t raised to minus half and 2 by 3 into t raised to 3 by 2 is the integral of t raised to half. In both the terms, you have to apply the formula integral of x raised to n dx equals x raised to n plus 1 plus c. So we get this step. Okay. So this is the integral I equal to integral of this in terms of t. तो t के फॉर्म में आंसर हो गया, but we want our answer in terms of x. Therefore I equal to, now open the bracket and substitute the value of t. So what is the value of t? You know very well, it is t equals 2 minus 3x. This is t, value of t is 2 minus 3x. So we have to substitute it. Therefore I equal to minus 1 by 3 into 3 into 2 root t. So here 3 going by 3. 3 get cancelled. It will be minus 2 into root t, but value of t is 2 minus 3x. So minus 2 into root of 2 minus 3x. It is first part. Now minus 1 by 3 into 2 by 3 minus 2 upon 9 into value of t is 2 minus 3x raised to 3 upon 2. So 2 minus 3x raised to 3 upon 2 plus constant of integration. So therefore I equal to minus 2 into square root of 2 minus 3x minus 2 upon 9 into 2 minus 3x whole raised to 3 by 2 plus c. This part can be written as 2 minus 3x into square root of 2 minus 3x. But this is the best answer. So question number 21 completed here. Now see question number 22. So in 22nd question, let I equal to integral of 7 plus 4x plus 5x square entire upon 2x plus 3 raised to 3 by 2 into dx. See your question once again. Let I equal to integral of 7 plus 4x plus 5x square upon 2x plus 3 raised to 3 by 2 into dx. So in this question, in this integral, rational part is the denominator, 2x plus 3 raised to 3 by 2. We put 2x plus 3 equal to t. Put 2x plus 3 equal to t. Differentiating with respect to x on both sides. Since derivative of 2x is 2 only and derivative of 3 is 0 equal to dt upon dx. So taking dx on the left hand side, so we get dx equal to half dt. क्योंकि हम 2 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो dx equal to half dt and value of x is t minus 3 upon 2. We इस स्टेप से 2x plus 3 equal to t. So therefore 2x equal to t minus 3 or x equal to t minus 3 upon 2. We need these two values, t equal to 2x plus 3 and x equal to t minus 3 upon 2 in the next steps. And here dx equal to half dt. Now integral I can be written as, this is 7 constant term as it is 7 plus 4x, so 4 into value of x, that is t minus 3 upon 2 from here, plus 5x square, so this will be plus 5 into t minus 3 upon 2 whole square upon 2x plus 3 raised to 3 by 2, but this bracket becomes t from this step, t equal to 2x plus 3, so denominator will be t raised to 3 upon 2 into value of dx dt by 2. See once again,
Therefore, I equal to integral of 7 plus 4 into t minus 3 upon 2 plus 5 into t minus 3 upon 2 whole square upon t raised to 3 by 2 into dt upon 2. What does it mean? This means after substitution, we have to convert whole integral part in terms of t, like this step. Dx is dt by 2, other terms are here and here. Therefore, I equal to this dt upon 2 means half dt, so taking half out of integral. So this will be half into integral of 7 plus, see this 2 2s are 4. So 2 into t minus 3 plus 5 as it is multiplied by t minus 3 upon 2 whole square. So upon 2 square means it is upon 4. And a minus b whole square here, that is t minus 3 whole square becomes what? T square minus 6t plus 9 whole divided by 4 into dt entire upon t raised to 3 by 2. Now LCM in the numerator is 4. So multiplying by 4 in each term, so it is equal to half integral 4 7 ja 28, 4 2 ja 8, and open the bracket 8 into t minus 8 3 ja 24. So 28 plus 8t minus 24 प्लस 4 कैंसल्ड हियर, क्योंकि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गोइंग बाय 4, या एलसीएम मेथड से या किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. तो 4 गोइंग बाय 4 मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 4 स्टेप्स चालू है यहाँ पर. तो 4 गोइंग बाय 4 इट इज 5 इंटू ईच टर्म. तो 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 अपॉन 4 इंटू टी रेज टू 3 बाई 2. 4 इंटू टी रेज टू 3 बाई 2 भी एंटायर अपॉन 4. यहाँ से एलसीएम मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई से ले सकते हो दिस 4, और यू कैन से multiplying by 4 in numerator and denominator. So this is the best option for the understanding, multiplying by 4 in numerator and denominator. So numerator multiplied by 4, it becomes 4 7 ja 28, it is 4 2 ja 8, open the bracket 8t minus 24 plus 4 4 get cancelled, 5t square minus 30t plus 45 here upon 4t raised to 3 by 2 into dt. Clear? Yes, this step is main for this question. Without mistake, you have to write this step. Now, simplify the numerator first. So, its highest power here t square. So, taking 5t square as first term minus 30t plus 8t. So, minus 30 plus 8 becomes minus 22t. And 28 minus 24, 4 plus 45 becomes 49 upon t raised to 3 by 2, because this 4 into 2 becomes 1 upon 8 here. So it is equal to 1 upon 8 integral of 5t square minus 22t plus 49 upon t raised to 3 by 2 into dt. ये स्टेप तक क्लियर हो गया. अब क्या करना चाहिए हमें, तो वो अभी भी हमारा इंटीग्रेशन ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ही है, अभी तक इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. So we should separate it, means separate each term. So this will be 1 upon 8 as it is into integral of 5t square upon t raised to 3 by 2. देखो 5t square upon t raised to 3 by 2. So 5 is constant as it is t square upon t raised to 3 by 2. So t square upon t raised to 3 by 2, that is 2 minus 3 by 2 becomes 4 minus 3 upon 2, that is half. So 5 t raised to half. देखो t square upon t raised to 3 by 2. So in upon, according to the indices rule, we subtract the powers. indices का रूल क्या है, जब भी इंडेक्स पढ़ चुके हो indices रूल में, तो t square upon t raised to 3 by 2 is t raised to half. So this will be 5 into t raised to half minus 22t upon t raised to 3 by 2. तो इसका पावर है 1 और यहाँ पर है 3 by 2. तो 1 minus 3 by 2 is minus of, so minus 22 t raised to minus of plus 49 upon t raised to 3 by 2.
तो 49 इंटू टी रेज टू माइनस 3/2 इंटू dt. So I equal to 1/8 integral of 5t raised to half minus 22t raised to minus half plus 49t raised to minus 3/2 into dt. क्लियर? तो ये अभी तक हमने सिर्फ इसको सेपरेट किया कि ईच टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, फर्स्ट अपॉन डिनोमिनेटर minus 22 upon t raised to 3/2 plus 49 upon t raised to 3/2, and simplifying them we get I equal to 1/8 integral of 5 t raised to half minus 22 t raised to minus half plus 49 into t raised to minus 3/2 whole dt. क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली. देखो एक एक को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है और सभी टर्म में कांस्टेंट को बाहर लेते हुए x रेज टू n, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx की फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये सभी टर्म का इंटीग्रेशन इजिली मिल जाएगा. तो यूजिंग द फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx वी गेट I equal to 1/8 as it is 5t raised to half into dt, integral of 5t raised to half into dt. So 5 as it is, integral of t raised to half dt 2/3 into t raised to 3/2 minus 22 integral of t raised to minus half dt in 2 root of t, 2 into root of t plus 49 as it is, integral of t raised to minus 3/2 is minus 2 upon root of t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये सभी टर्म का इंटीग्रल यहाँ पर 1/1 कंफर्म हो गया और सभी टर्म के लिए जैसा कि मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया यूजिंग द फार्मूला इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx. तो हियर n इक्वल टू हाफ, हियर n इक्वल टू माइनस हाफ, हियर n इक्वल टू माइनस 3/2 and 5, 22 and 49 are constant terms. They will be as it is in the next step. Okay, now simplifying and substituting the value of t. तो एक एक टर्म को देखते हैं. देखो 1/8 into 5 into 2/3. क्लियरली 2 4 जा 8 कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 5 1 जा 5 अपॉन 3 इंटू 4, यहाँ 4 रिमेनिंग होगा 2 से डिवाइड होने के बाद तो 3 4 जा 12. तो I इक्वल टू 5/12 इंटू टी रेज टू 3/2 है तो t का वैल्यू रखते हैं 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 रेज टू 3/2. नाउ नेक्स्ट स्टेप को माइनस एज इट इज. अब यहाँ देखो 1/8 इंटू 22 इंटू 2, तो ये 2 4 जा, लेकिन यहाँ भी इवन नंबर है तो 2 11 जा 2 2 जा 2 4 जा 8. तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 11/4. Now see once again, I equal to 5/12 2x plus 3 whole raised to 3/2 minus it is 1/8 into 22 into 2. So here 2 4 ja 8 and 2 11 ja 2 2 ja, that is here 11/2 only, minus 11/2 into root of t, that is root of 2x plus 3 minus 1/8 into 49 into minus 2, here minus 2 और 8, 2 4 जा 8 डिवाइड हो जाएगा तो minus 49/4 into root of 2x plus 3 plus c. c is constant of integration. See once again the answer. I equal to 5/12 into 2x plus 3 whole raised to 3/2 minus 11/2 into root of 2x plus 3 minus 49/4 into root of 2x plus 3 plus c. This is the final answer for this question. Now see question number next, that is 23rd. In 23rd, let I equal to integral of x square upon root over 9 minus x raised to 6 into dx.
So I equal to integral of x square upon square root of 9 minus x square into dx can be written as integral of x square upon square root of 9 minus x cube the whole square into dx. So x raised to 6 can be written as x cube whole square. Just only a small change here in the adjustment of the integral. Only x raised to 6 can be written as x cube whole square. Now we put x cube, this x cube equal to t. Now differentiating with respect to x on both sides. So derivative of x cube is 3x square and equal to dt by dx. So this can be written as 3x square into dx equal to dt. Therefore x square into dx equals 1 upon 3 into dt. ये लिख सकते हो। तो अब इसी सब्स्टिट्यूशन को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करते हैं इसमें। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, देखो डी टी अपॉन 3 था, 1 अपॉन 3 dt, तो 1 अपॉन 3 टेकन आउट, आई इक्वल 1 अपॉन 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर डी टी। हो गया 9 माइनस टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि टी हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर डी टी। आफ्टर दैट what we have to do, this 9 can be written as 3 square and t square is t the whole square, means integral is of the type 1 upon under root a square minus x square dx, and you know very well integral of 1 upon square root of a square minus x square dx equals sine inverse x by a, sine inverse x by a plus c. This is the formula. So I equal to 1 by 3 साइन इनवर्स t, और एक इसका स्क्वायर है 3 का, तो साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन एंड सिंपल फार्मूला हियर। क्योंकि हमारे फार्मूला लिस्ट में रेफर कर सकते हो, मैंने सभी फार्मूले ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज में दे दिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखोगे तो सभी फार्मूले वहां पर मिलेंगे। तो देयरफॉर आई इक्वल टू 1 अपॉन 3 साइन इनवर्स x cube upon 3 because it is value of t. So sin inverse x cube upon 3 plus c, which is constant of integration. So therefore integral of x square upon square root of 9 minus x raised to 6 is 1 by 3 into sin inverse x cube upon 3 plus c. Now see question number 24. In 24th question, let I equal to integral of 1 upon x into x cube minus 1, 1 upon x into x cube minus 1 into dx. तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो अगर एक्स क्यूब होगा यहाँ पर तो ये सिमिलर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दिस विल बी 1 into x square, here x into x square x cube into x cube minus 1 into dx। तो अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 dx, तो पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, जो कि एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो उसमें स्क्वायर टर्म श्योर आएगा। तो put x cube minus 1 equal to t, differentiating with respect to x on both sides. Therefore 3x square into dx, 3x square into dx equal to dt. Therefore x square into dx equal to dt by 3, क्योंकि ये x स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू में चाहिए, इसलिए इसको हमने इतना एडजस्ट करके रख लिया कि x स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है, dt अपॉन 3। तो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज, अब देखो यहाँ पर dt बाई 3 है, दैट इज 1 अपॉन 3 इंटू डी टी, तो टेकिंग 1 बाई 3 आउट ऑफ इंटीग्रल, तो I इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी। देखो यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब क्या होगी, एक्स क्यूब इक्वल टू टी प्लस 1, तो ये एक्स क्यूब का सब्स्टिट्यूशन मैंने लिया टी प्लस 1 इंटू टी, क्योंकि ये इसको हमने टी एज्यूम किया है सेकंड ब्रैकेट को, एक्स क्यूब माइनस 1 इज टी, सो दिस इज टी, तो
आई इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रल 1/t+1 इंटू टी डी टी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे चलते हैं। देखो हमारे पास है t+1 इंटू टी इन द डिनोमिनेटर, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग t इन द न्यूमरेटर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग t इन द न्यूमरेटर। देखो 1 ऑलरेडी था तो +1 हमने सेम रखा है, हियर +t एंड -t, डिनोमिनेटर विल बी सेम, नो चेंज। So therefore I equal to 1/3 into integral of t+1 minus t upon t+1 into t whole dt. After that this is equal to 1/3 into integral of, अब इनको सेपरेट करते हैं। देखो t+1, ये यहाँ पर t+1 अपॉन t+1 इंटू टी, क्या मिलेगा? t+1 कट 1/t ओनली, माइनस t अपॉन t+1 इंटू टी, यहाँ पर टी कट होगा, 1/t+1 इज द रिमेनिंग। अब ये टू टर्म्स में सेपरेट हो गया, तो i इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t माइनस 1/t+1 इंटू डी टी। Now integrate each part according to the integral formula. So it is equal to 1/3 integral of 1/t dt, you know very well, log of t, minus integral of 1/t+1 log of t+1 plus c, which is constant of integration. So I equal to 1/3 into log of t minus log of t+1 plus c. Now we resubstitute the value of t. What was t? x cube minus 1. चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो i इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। अब यहाँ पर देखो log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स क्यूब, बोथ टर्म कंटेनिंग लॉग, तो हम लोग क्या करते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n की फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। So therefore I equal to 1/3 into log of mod of x cube minus 1 upon x cube modulus closed plus c. So anyone can write here bracket also instead of modulus. So I equal to 1/3 log x cube minus 1 upon x cube plus c. Now see question number 25. 25th क्वेश्चन में अपना क्या है, तो इसको देखते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू लॉग ऑफ x इंटू log x इंटू डी एक्स। देखो 1 एंटायर अपॉन x इंटू log x dx। पुट log x इक्वल टू t, log x इक्वल टू t। तो log x इज t, ये हमने अगर सब्सटीट्यूट कर लिया तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, therefore derivative of log x is 1/log x, but it is not x. By chain rule d by dx of log x is 1/x equal to dt by dx, तो dx को हम पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्ट कर लेते हैं। तो therefore it is 1/log x into 1/x into dx equal to dt। और यहाँ पर देखिए ये रिमेनिंग टर्म यहाँ क्या है, 1/x into log x, तो 1/x into log x into dx, ये पार्ट को ले लेते हैं dx, और यहाँ है 1/x log x, तो इसको भी तो वही लिखोगे ना, 1 into 1 1, तो 1/x into log x, ये हो गया 1/x log x into dx, ये होल पार्ट अपने पास अवेलेबल है, इट इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास इसको हमने t लिया हुआ है और ये इतना इंटू dx, ये मिलाकर हो गया dt। तो देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू 1/t इंटू dt। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये पूरा पार्ट सिर्फ t रह गया यहाँ पर। तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू dt। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1/t dt इज log ऑफ t बाय फार्मूला प्लस c which is constant of integration. Therefore I equal to log of mod log x मॉडुलस क्लोज्ड प्लस c। देखो वैल्यू ऑफ t हमने क्या लिया था, log of log x, उसको यहाँ रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, इट इज इक्वल टू
log of log x plus c. So instead of modulus, you can write bracket also. So this is very important question and very tricky question for the competitive exams as well as also for board exams. तो ये 25th क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर है। यहाँ पर log x, देखो यहाँ पर भी 3 टाइम्स लॉग थे और यहाँ पर भी 3 टाइम्स ही लॉग है, तो यहाँ से भी अपना आंसर गेस कर सकते हो। और 1/x and dx eliminated in integral. For competitive exams, for the direct answer, you can guess your option. The integral of 1/t dt is log of t plus c. So I equal to log of mod of log x plus modulus closed plus c, where c is constant of integration. So for any integral, suppose you are solving integration, so you should write the formula list first properly. After that you should start integration practice. तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन हमारे डियर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।